integrated study. Basically, I'm not going into the from the basic thermodynamics like basic chemistry part. Okay. Next class or next class onwards, I will talk about the basic geochemistry or like basic thermodynamics, all the periodic table properties I will discuss. But today I will discuss about the trace element geochemistry. That is most important part for the GATE examination as well for the NET examination and GSIR examination as well. Okay, so the trace element is in both CSR syllabus पे भी है, जियोकेमिस्ट्री GSI मेंस पे भी है आपका, ठीक है, और आपका CSR नेट पे भी है the trace element part. Majority of the CSR net question and gate question is from the numerical and slightly fact based question, slightly tricky one, जैसे कोई periodic table से कोई question आ गया, basic thermodynamics से कोई question आ गया, ठीक है, कोई numerical पूछ लिया. So that is from the CSI net and gate aspect. For the GSI mains, there will be slightly subjective and like long answer type. You can write something about like Goldsmith classification of element, all these siderophile element, chalcophile element. You have to write something, right? So Goldsmith substitution rule अगर पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, right? Any doubt regarding the syllabus part? Let me just, जैसे मान लो कॉस्मिक अबंडेंस है, ठीक है, सिलेबस पे मेटोराइट का टाइप्स है, मेटोराइट क्लासिफिकेशन है. इट इज बोथ इन द जीएसआई मेंस as well as in the GATE syllabus. Then evolution of the earth है, ठीक है, geochemical evolution, how you can classify based on the isotopic ratio and all those like properties of major element, ठीक है, major element geochemistry, and how you classify and how you classify all those like evolution property based on isotopic ratio and by the analysis of major element, ठीक है. फिर जियोकेमिकल साइकिल है इन द बोथ जीएसआई मेंस एज वेल एज द गेट एग्जामिनेशन, ठीक है. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट है इन क्रॉस्ड एंड मेंटल, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस पार्ट. एनी डाउट रिगार्डिंग द सिलेबस एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन आस्क. Otherwise, let's talk about the trace element part. We'll solve some numerical as well in this class and also some subjective way of approach. Any doubt regarding the syllabus? तो अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो राइट डाउन द फ्रैक्शनेशन ऑफ एलिमेंट इन मिनरल एंड रॉक. लाइक यू कैन गेट सम 5 मार्क और 10 मार्क और 15 मार्क क्वेश्चन, ठीक है. फिर नॉन्स्ट पार्टीशन कोफिशिएंट पूछेगा, ठीक है, हाउ द नॉन्स्ट इक्वेशन बेस्ड ऑन नॉन्स्ट इक्वेशन हाउ यू राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द के वैल्यू, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है. देन बॉल्क पार्टीशन कोफिशिएंट, राइट. सो ऑल दिस डिटेल विल गोइंग टू स्टडी, ठीक है. सो दिस इज द सम ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द जीएसआई prelims, sorry, means. Define partition coefficient or KD value or a D value. Discuss Goldsmith rules that govern chemical fractionation of element in silicate melt using partition coefficient of compatible and incompatible element. Explain batch melting in magma evolution. All those like model, ठीक है, be it batch melting or equilibrium melting, okay, or relief fractionation. So these are the model for the explanation of the magma evolution, ठीक है. ये फिर पढ़ेंगे हम उसके बाद. Then there is some question that has been asked. Write the account of utility of the trace element in igneous petrogenesis, right. What is the implication or application of the trace element for the understanding of the igneous petrogenesis, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे gradually. So let's talk about the trace element. Before jumping into the trace element, anyone can tell me what do you mean by major and minor element? Tell me. So those are in abundance is called major element, and trace element which are less is very less. 1%. What do you mean by Binay Babu? Major element, yes, you are absolutely right. Major element, minor element and trace element, these are not only the classification based on the abundance, ठीक है. ये abundance के
basis से only classify, not possible. These are the classification based on the concentration. ठीक है, जब मान लो कहीं रॉक सैंपल तुम फील्ड जा रहे हो, ठीक है, रॉक सैंपल कलेक्ट करके लाए हो लैब पे, then you analyze all the, so this part no is called the chemical analysis of rock. Chemical analysis of rock. Okay, so you analyze all the species or rock sample. Okay, based on that you can characterize or you can differentiate whether this is a major element, ठीक है, or this is a minor element or this is a trace element. This is classification based on the abundance as well as the concentration of the element. Are you getting my point or no? Concentration, when some particular sample come to the lab, then you analyze the rock sample, then you finally conclude whether the major element abundance in the rock or trace element abundance in the rock, ठीक है, or minor element. Are you getting my point or no? Any doubt? सिर्फ जिसको भी पूछो सिर्फ यही बोल देते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द ग्रेटर देन 1%, right? It is not like that. What do you mean by 1%? That is one weight percentage, right? I will discuss. That is the one tricky also. There is a like conversion between the mass percentage and volume percentage. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे. मोड आपको पता है ना, हम कन्वर्सन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट? कन्वर्सन बिटवीन द मोड परसेंटेज टू वॉल्यूम परसेंटेज हम डिस्कस करेंगे. मेजर, माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट, दीज आर द एलिमेंट क्लासिफाइड नॉट ओनली द अबंडेंस, ठीक है, इट इज ऑल्सो फॉर द कंसंट्रेशन. कितना कंसंट्रेशन है एलिमेंट का पर्टिकुलर इन ए पर्टिकुलर रॉक सैंपल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? एनी डाउट? Any doubt? Ruby, any doubt? समझ गए, आ गया ना? So major element is greater than 1 weight percentage, ठीक है, it is weight percentage of a rock, not percentage, ठीक है. Minor element in between 0.1 to 1 weight percentage of rock, ठीक है. 1 weight percentage मतलब कितना है? 1 weight percentage is equivalent to 10,000 ppm, parts per million. What do you mean by ppm? It is 1 parts out of 10 to the power 6, 1 million, right? Am I right or wrong? Right. So minor element, so 0.1 to 1 weight percentage of a rock. Trace element is less than 0.1 weight percentage of rock, that is approximately 10,000 ppm. 10,000 ppm के कंसंट्रेशन से नीचे जो आएगा वही क्लासिफाई होगा ट्रेस एलिमेंट, ठीक है. जो 0.1 से 1 weight percentage आएगा, that is approximately 10,000 ppm का कंसंट्रेशन, वही है माइनर एलिमेंट, ठीक है. जो ग्रेटर देन 1% ऑफ ए रॉक आएगा उसको बोलेंगे मेजर एलिमेंट, ठीक है. All major and minor element together make of nearly 100% by weight. See, it is by weight, not by volume percentage. It is by weight percentage. There is slightly difference between the weight percentage and volume percentage. We will discuss and practice some numerical as well, ठीक है. Any particular element can be major element in one rock. जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, सपोज, ठीक है, वो एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर रॉक पे मेजर एलिमेंट बिहेव कर सकता है, ठीक है. सपोज मान लो कि पोटेशियम, मान लो इन ग्रेनाइट रॉक, इट कैन बी बिहेव एज द मेजर एलिमेंट, और सेम एलिमेंट in another rock behave as the trace element or minor element. Are you getting my point or no? It depends upon the concentration of the element and the weight percentage of the element. Clear or no? इतना समझ आ गया or no? Yes sir, clear. कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट बिहेव कर सकता है मेजर एलिमेंट एज ए मेजर एलिमेंट और माइनर एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है. ट्रेस एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन ppm पे, अभी बताया था 1 parts out of 1 million, right? Referred to as ppm, equivalent to gram per million, grams 1 weight percentage, that is approximately 10,000 ppm. Clear or any doubt?
कंसंट्रेशन ppm पे भी मेजर होता है, माइक्रोग्राम पे भी यूज होता है. नॉर्मली ppm हम नॉर्मली लेते हैं यूनिट. एनी डाउट टिल नाउ? Okay, so measure element usually greater than 1 weight percentage. Okay, 1 weight percentage मतलब 10,000 ppm. Okay, that is mostly oxide. ठीक है, mostly oxide. SiO2, L2O3, NGO, CaO, Na2O, K2O, H2O, ये हो गया. ये तो हो गया volatile वाला, because this is the present in the huge abundance, so that's why. Minor element same as usually in between 0.1 to 1 percentage, that is TiO2, MnO, P2O5 and CO2. Read those example as well, right? अगर JSI mains पे पूछेगा कि write down about the measure element, you can write something about measure element कि this is the measure element, example are these. ठीक है, it is measured in the ppm level. ठीक है, so you can write कि any particular element can behave as the major element or minor element depending upon the concentration. ठीक है, you can write. ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, you can write prepare in the both way. सपोज कोई भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल आ गया तो क्या पूछ सकता है, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दिस टाइप ऑफ टॉपिक. ठीक है, and trace element usually less than 0.1%, everything else will be the trace element. Clear or any doubt regarding this classification? Okay, so see the chemical analysis of the sum of the igneous rock. जैसे मान लो कहीं पे peridotite sample ले आए, so what are the different type of oxide present in the peridotite. ठीक है, जैसे ये chemical analysis है, ठीक है, ये lab analysis है. When you analyze the periodic sample, ठीक है, you get the SiO2 42.26%, TiO2 0.63%, so summation will be approximately 100%. ठीक है, ये केमिकल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है what are the different type of major element present in the sample, what are the different type of minor element or trace element present in the sample. Clear or any doubt? So what is the trace element? I already discussed. ठीक है, it depends not only the abundance percentage, it depends upon the concentration when you analyze when you chemically analyze the sample. ठीक है, for most silicate rock, oxygen, silicon, aluminum, sodium, magnesium and calcium are the major element. ठीक है, mostly the oxide type of element, mostly oxide, which is the abundance, is nature, is called the major element. और ट्रेस एलिमेंट और मेजर एलिमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? एनी डिफरेंस? व्हाई यू गिव सो मच इंपोर्टेंस टू द ट्रेस एलिमेंट, व्हाई नॉट टू द मेजर एलिमेंट? क्यों है? एनीवन? क्यों हम ज्यादा डिस्कस करते हैं ट्रेस एलिमेंट के बारे में कंटिन्यूअसली, एंड व्हाई इट इज लाइक मोस्ट asked question in the examination? क्यों? Anyone? बताओ. Even if it is wrong, you can say something, right? Sir, they are precious. Exactly. Costly. Exactly. Any other answer? Composition of earth ही हमें पता चलता है. Exactly, that is more important part. Any other? Because most important parameter is it is very sensitive. The concentration is so low and it is very sensitive in nature. ठीक है, तो जब हम XRT XRP पे एनालिसिस करते हैं, it gives the approximate value, मतलब exact value of the rock, of different type of trace element or a different type of major element. ठीक है, it is so sensitive and it gives the accurate value. Any type of chemical parameter or any type of trace element, any type of major element gives the accurate value. It is more one more important thing, and another thing is it do not affect the chemical and physical properties of the rock. किसको भी ये अफेक्ट नहीं करता है, ऑल दोस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक और द एनी पर्टिकुलर सिस्टम.
That's why we normally give emphasis on the trace element. Are you getting my point or no? क्यों इम्पोर्टेंट है पता है? ओके, फर्स्ट तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, इसलिए हम इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और एनी टाइप ऑफ केमिकल एनालिसिस जब करते हैं लैब पे, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव के वजह से केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करता है, इट गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, बीट मेजर एलिमेंट, बीट ट्रेस एलिमेंट, ठीक है. प्लीज गो थ्रू दिस, यू कैन गेट such GSE in the subjective paper. What is the trace element and what is the behavior of the trace element and why the trace element is so important, ठीक है. And one more thing is the trace element obeys the Henry law. The trace element is an element whose activity, there is a slightly difference between the activity and concentration. Activity concentration same nahi hai, we normally taken as the same, but it is not, okay, it is not like same. Activity concentration अलग है, ठीक है. We gradually discuss about this, how, what is the Henry law, how Henry law behave in the trace element, right, for understanding of the igneous petrogenesis. इसका application कोई बता. Why the trace element is more important and what is the application, हम क्यों यूज करते हैं बताओ. क्यों यूज करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है. एंड जैसे द राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेस एलिमेंट, व्हाई द ट्रेस एलिमेंट आर सो यूजफुल, बताओ. एनी आइडिया? इट इज वेरी बेसिक. आई एम आस्किंग द वेरी बेसिक. इवन इफ you don't nothing, you can speak. I always mention in the class, you can speak even the you don't know nothing regarding the topic or whatever is going on right now. Even if you don't know, tell me something. क्यों ट्रेस एलिमेंट हम यूज करते हैं बताओ. why trace element is so useful, that is application of the trace element, बताओ. any other answer or any other take on this, you can say. First तो ये मेल्ट के composition, as said their concentration is sensitive to the geological process. Yes, yes, yes Vinay Babu, it is the concentration is low and sensitive for the geological process. Yes, for the understanding the geological process, right, understanding geological process, ठीक है. पहले तो ये एप्लीकेशन हो गया. सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग मेल्ट कंपोजिशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पीटी कंडीशन ऑफ द मैग्मा और मेल्ट. बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, के वैल्यू कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, क्यों हम यूज करते हैं इसको. मैं क्यों बोल रहा हूं कि अंडरस्टैंड द पीटी प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द मेल्ट, व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है. आगे जाके आपको पता चलेगा व्हेन यू डिस्कस द पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ठीक है. सो ट्रेस एलिमेंट इन रॉक और मैग्मा डू नॉट अफेक्ट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, अभी बताया था. एज ए होल टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, कुछ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक ये अफेक्ट करता है, वरना नहीं करता है. it generally do not affect the chemical physical properties of the system, ठीक है. Trace element present in so low concentration that they behave passively, do not influence the geochemical process. It do not affect the physical and chemical properties and do not influence the geochemical process. Whatever the geochemical and geological process is going on in the magma chamber, ठीक है, during the melting or crystallization behavior, it do not influence any processes, ठीक है. कोई मान लो कोई magma chamber है, ठीक है, magma chamber completely made of the melt. When it crystallizes, different type of fractionation occur during this process, ठीक है. The trace element do not influence during the fractionation event, ठीक है. So that's why it is so much importance. That's why in the lab, ठीक है, जब लैब पे एनालिसिस करते हैं इसलिए हम एक्यूरेट निकलता है ना. So trace element do not control the appearance or disappearance of the major element. Behavior is controlled by element matrix, element mineral reaction.
ठीक है. So there will be some interaction between the element or mineral, ठीक है, whatever is present in the magma chamber. There will be some reaction taking place. जब हम distribution और partition coefficient के बारे में discuss करेंगे, then we will discuss कि how there will be some reaction or there will be slightly interaction between the mineral and liquid, how the trace element behave in a different way. ठीक है, हम discuss करेंगे. ठीक है. Different element have different chemical properties like charge, size. Therefore different element behave different way during different geological processes. ठीक है. So that's why we normally use the trace element for understanding the geological event or geological processes. Clear or any doubt? So it is a very subjective, not like conceptual. You can get in the subjective paper. ठीक है. Write down the application of the trace element. Are you getting my point? Any doubt? कोई डाउट है क्या? So importance अभी बता दिया था. Let's go through this. ठीक है. Why the trace element is so much important? Okay. Now talk about the chemical fractionation. Chemical fractionation क्या है बताओ? Anyone? Chemical fractionation. Tell me. Tell me the chemical fractionation. क्या समझते हो आप? Elemental separation. Yes, exactly. Really good answer. It is not the mass fractionation. It is not like mass fractionation. It is called the elemental separation. ठीक है. Like you can say it is the separation between the atom. ठीक है. और like particular say ion बोल सकते हो. How in a particular log how you distribute among two ion, or how you distribute between the two element, or how there will be the partition between the two elements, that is called the chemical fractionation. What about mass fractionation? What about mass fractionation? This is stabilizer पे पढ़े होंगे mass fractionation or fractionation factor. What is mass fractionation? When you measure in terms of its mass, that is called the mass fractionation. ठीक है. जैसे मान लो कोई एक आदमी है, the weight of the student is approximately 70 kg. Another is suppose 90 kg. So if you there is will be the race, running race, suppose है, then I can say the 70 kg is more like mobile or easily fractionated from the heavier one. Are you getting my point or no? So this is the lighter student, this is the heavier student. ठीक है. कोई रनिंग रेस चल रहा है, ठीक है, ट्रैक पे, मैं ये बोल सकता हूँ that 70 kg or lighter student is more fractionated or more mobile than the 90 kg student. Am I right or wrong? So this is all about the mass fractionation. But in case of the element separation or element fractionation, so there will be some distribution between the ion or element depending upon the behavior of the element or like ion. Are you getting my point or no? Behavior of element. सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से सेपरेशन होता है? Exactly. Not only that factor, chemical composition एक पैरामीटर हो गया, फिर प्रेशर टेम्परेचर अनदर पैरामीटर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग अनदर पैरामीटर हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज अनदर पैरामीटर हो गया. सो देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर इन व्हिच देयर विल बी सम केमिकल फ्रैक्शनेशन ऑकर बिटवीन द टू एलिमेंट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? In terms of वही बोला ना, so this is all about in terms of physical and chemical parameter, right?
So how the two element is separating or partitioning depending upon the physical and chemical properties. So that is called chemical fractionation. But in case of the mass fractionation, that is mostly occur in the isotope, that is depending upon the mass of the species. ठीक है, depending upon the ये जो example दिया, so lighter one is more fractionated than heavier one. ठीक है. So chemical fractionation refers to the separation of the chemical compound depending upon the chemical parameter or chemical properties into their constituent parts, often through physical and chemical properties. ठीक है. So chemical fractionation can provide insight into the formation and evolution of the earth crust, how the earth crust form and how the earth crust evolve through time. So that tells about the chemical fractionation. Okay, what are the different type of chemical properties of earth crust? Okay, what are the different type of chemical parameter or chemical species is present in the earth crust, and how there will be the evolution taking place. So this tells about the chemical fractionation and the behavior of element as well. Okay, as well as the behavior of element and isotope in natural system. Clear or any doubt? It is all about the chemical fractionation. Don't confuse between the chemical fractionation and mass fractionation. Clear? Okay. So physical separation, this involves the separating mineral or other substance based on their physical properties, जैसे size हो गया, density हो गया, magnetic susceptibility of rock हो गया. So based on the physical properties, there will be some separation between the mineral or element, that is called the physical separation. What about the chemical separation? This involves using the chemical reaction. But whatever the chemical reaction between the rock or element is taking place, and how they behave during the reaction, and how they behave as well as the reaction is taking place during the separation or partitioning. So that is chemical separation. Isotopic separation between the isotope ratio, इसीलिए हम ratio लेते हैं ना, जब isotopic study करते हैं, so we generally take the isotope ratio for the proper understanding of the isotopic separation. This involves the separating isotope of a particular element, which can provide the information about the origin and history of material being studied. Clear or any doubt? Please. Okay. Then comes to the application part. Why the chemical fractionation is so much important. So chemical fractionation can be used to study wide range of geological processes, including the formation of mineral, movement of water, okay, how there will be the different type of mineral form, how they evolve in the earth crust, okay, movement of water, fluid through earth crust, and the evolution of the earth atmosphere, okay, in the ocean over time. So different type of chemical parameter and chemical properties and species is present in the earth crust and atmosphere, how they behave and how they evolve, okay, in the present system. So that tells about the chemical fractionation. कोई doubt है या नहीं? So this is all about the very basic, ठीक है? Any doubt till now? यहाँ से ना ज़्यादातर सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमें, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सब्जेक्टिव. यू कैन नॉट गेट लाइक इन द ऑब्जेक्टिव पेपर. Maybe you can get 1-2 question, but this is not important for the objective examination. Let's talk about partition coefficient. So this is really important concept. We did any type of objective exam as well as the subjective exam. CSI means हम फास्ट पे दिए थे ना ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो, डिफाइन पार्टीशन कोएफिशिएंट, डिस्कस गोल्डस्मिथ रूल्स, गवर्न द केमिकल फ्रैक्शनेशन. ये देखो, गवर्न केमिकल फ्रैक्शनेशन ऑफ एलिमेंट इन सिलिकेट मिल, राइट. यू कैन आल्सो राइट द डायग्राम आल्सो, है ना. केमिकल जैसे मान लो मैग्मा चैम्बर दिखा दिए, है ना, कोई स्पेसिस दिखा दिए एक्स वाई जेड, ठीक है, हाउ दे आर फ्रैक्शनेटिंग. यू कैन गिव द डायग्राम आल्सो, ड्रॉ डायग्राम इन योर ओन वे. मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जीएसआई मेंस इज ऑल अबाउट स्किल्स.
सब जानते हैं कि कंटेंट इज सेम, ठीक है। अगर बोलूंगा कि केमिकल फ्रैक्शनेशन, कंटेंट इज सेम, ठीक है। सपोज 5 जन है, whatever you know, the next one is know that one only, but thing is how you write and how you present, so that is most important part for the GSI mains. So mains is all about the skill setup, that is, but objective paper test your knowledge and concept. Clear? Are you getting my point or no? Let's talk about partition coefficient because it is asked in the gate, CSR net, weighted subjective paper. What do you mean by partition coefficient? और कोई कोई बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, इट इज सेम। कोई बोलते हैं लाइक नॉन्स्ट पार्टीशन कोफिशिएंट, same name, nonst give the partition coefficient, that is called the nonst coefficient. Tell me what do you mean by partition coefficient, बताओ। Vinay Babu, tell me. Ruby, are you there or no? Yes, sir. Tell me the partition coefficient. It is most important concept in the gate examination because like it is continuously asking in the gate, but in near future you can uh, see the development of the numerical in GSI mains, definitely will be there, definitely in numerical आएगा GSI mains पे in coming year, so that is the future development. बताओ partition coefficient क्या है? Through partition coefficient, we know the amount of which compatible and incompatible element are present. Exactly. So that is the application part, है ना? We are talking about. We know from the partition coefficient the element compatibility, right? Are you saying this, है ना? Yes. Compatibility. But what is the partition coefficient? ये तो हो गया एप्लीकेशन आपका कि हम एलिमेंट कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। रिलेटेड टू रेसिडेंस टाइम, रेसिडेंस टाइम क्या है? यहाँ कहाँ कहाँ आ गया रेसिडेंस टाइम? व्हाट डू मीन बाय रेसिडेंस टाइम? टेल मी। रेसिडेंस टाइम अलग है, हाउ मच इट रिसाइड, इट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजियोलॉजी, राइट? For the volume of reservoir and you can calculate an element reside in a reservoir. Yes, yeah, you can like talk about that part, but residence time is a hugely most appropriate literature for the hydrogeology part, है ना? An element reside in a reservoir, okay, that is not like approximately आंसर आई एम सेइंग। सपोज एक है मैग्मा, सपोज मान लो सॉलिड रॉक ले लो, सॉलिड रॉक, ठीक है। यहाँ पे कोई एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट मान लो, ठीक है। सपोज मान लो इरुवियम है, इरुवियम पर्टिकुलर एलिमेंट है। व्हेन इट मेल्ट्स, ये व्हेन इट मेल्ट्स द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रॉक इज गोइंग इनटू द सॉलिड फेज। जैसे मान लो यही रॉक पे है और दिस एलिमेंट इज फ्रैक्शनेटेड इनटू द मेल्ट फेज, इट गोइंग इनटू द लिक्विड फेज, दैट इज कॉल्ड द पार्टीशन कोएफिशिएंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, है ना? टेक्स टाइम, बट सपोज एक सॉलिड रॉक है ना? सॉलिड रॉक है, ये सॉलिड रॉक हो गया। यहाँ पे एक सपोज मान लो एलिमेंट है, इरुवियम। जब इसको मेल्ट करोगे, व्हेन इट अंडरगोज मेल्टिंग, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज अंडरगोइंग टू द लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, that is called the partitioning. That is not the partition coefficient, that is called partitioning between the solid phase and liquid phase.
Are you getting my point? So इरूबियम जब मेल्टिंग करोगे एक पर्टिकुलर रॉक को, सपोज पर्टिकुलर रॉक पे एक एलिमेंट है दैट इज एक्स भी मान लो, सो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज गोइंग टू द मेल्ट फेज ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस और लाइक सॉलिड फेज. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सारे एलिमेंट जो है सिर्फ मेल्ट फेज चला जाएंगे और लिक्विड फेज चला जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है. सो दिस एलिमेंट प्रीफरेंस, उसको बोलते हैं प्रीफरेंस. ठीक है, सपोज एक्स एलिमेंट प्रीफर टू गो टू द सॉलिड फेज or liquid phase. So in between the partitioning between the solid phase and liquid phase, we normally measure the concentration in the solid phase and in the liquid phase. Then we define a coefficient that is called the Kd or normally say D. ठीक है? So when you take the concentration in the solid phase, open when you take the concentration in the liquid phase. ठीक है, then we defining the partition coefficient. When you take the ratio, that tells about the partition coefficient or Kd. Are you getting my point or no? Kd equal to concentration of the solid or concentration of the liquid. Clear or any doubt? Ruby, clear or any doubt? Partition coefficient एक coefficient है when a particular rock is undergoes melting, how the particular element is fractionated away or partitioning and going into the particular phase. ठीक है, particular phase जाएगा, then we measure a coefficient and take like concentration in two phases like solid system or liquid system, then we take the ratio. Are you getting my point or no? Yes, sir. Clear? So that Yes, is sir. called the partition coefficient or D or Kd, जो भी बोलो. Partition coefficient when you take the ratio between the solid system and liquid system. Concentration of the solid phase upon the concentration of the liquid phase in particular element. Suppose Ci मान लो. I is the element. ठीक है? Clear or any doubt? क्लियर ना? नो डाउट? अगर Yes, डाउट sir. है तो बोलो, मैं फिर से अगेन आई विल रिपीट. नो डाउट? ओके, दैट्स ग्रेट. सो पार्टीशन कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट सिंपल Kd और D. Partition coefficient or distribution coefficient of element I, any particular element between phase alpha and beta. ठीक है, any particular phase alpha and beta. So di alpha and beta मतलब distribution coefficient of a particular element I हो गया between two phase alpha और beta. So concentration in alpha phase upon concentration of the beta phase. Clear? ये आपको समझ में आ गया एक्सप्रेशन यार? एनी डाउट? जो बताया, सपोज एक रॉक है, इसको मेल्ट करोगे, पर्टिकुलर एलिमेंट आई है, ये सॉलिड जाएगा, ये लिक्विड जाएगा. सपोज ये अल्फा फेज है, ये बीटा फेज है. ठीक है, सो अल्फा एंड बीटा विल बी द टू फेजेस एंड आई विल बी द एलिमेंट. सो हाउ द पर्टिकुलर एलिमेंट इज पार्टीशनिंग बिटवीन टू फेज अल्फा एंड बीटा. सो दैट टेल्स अबाउट द distribution or partition coefficient. ठीक है, so concentration of the particular element I in alpha phase upon concentration of the particular element I in beta phase. Clear? यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा. So this is most important. Write down, right? Write down the expression. You can also write in the subjective paper. Suppose partition coefficient पूछ लिया, first write down the definition, then write down the mathematical expression. और राइट डाउन ऐसे में जैसे दिखाया ना, ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करके एलिमेंट दिखा देना. सो व्हेन इट पार्टीशन बिटवीन द अल्फा फेज एंड बीटा फेज और वन फेज टू फेज, राइट इन योर ओन वे. वन एक सिस्टम हो सकता है, टू एक सिस्टम हो सकता है. सो यू कैन राइट द कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन वन सिस्टम और वन फेज
upon the concentration of the element I in 2 phase. Are you getting my point or any doubt? अगर डाउट हो तो बार बार पूछो, I will explain. But don't come to the home or don't go to the home with a dumb mind. ठीक है? Clear or any doubt? No issue. Okay. Where one phase is liquid, the convention is the solid is placed on top. अभी बताया था. So if there will be the two phase between the solid and liquid, अगर solid and liquid phase है, so distribution coefficient of a particular element I between solid and liquid phase is concentration of the particular element I in solid phase or concentration of the particular element I in liquid phase. अभी जो बताया था मैं. In a simplistic way, I can write also. Any particular, suppose ये सॉलिड रॉक है, ये एलिमेंट आई है, ठीक है, एलिमेंट आई है, ये पार्टीशन होगा टू फेज पे सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम, ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ आई बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड सिस्टम इज concentration of the element I in solid system upon concentration of a particular I in the liquid system or liquid phase, जो भी बोलो. Clear or any doubt? Now, so this tells about the trace element behavior. Trace element behavior. ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है, कैसे एप्लीकेशन है, हाउ यू कैन नो द बिहेवियर ऑफ द ट्रेस एलिमेंट. अभी और एक बताया था, इट कैन प्रेडिक्ट द पीटी कंडीशन. ठीक, जैसे मान लो कोई सिस्टम है, मान लो पर द टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर लो है सिस्टम का, ठीक है, तो बता सकते हो क्या, where will be the particular element is distributed among the solid or liquid. एलिमेंट कहां प्रीफर करेगा, प्रीफरेंस कहां होगा. So the concentration of the solid will be the higher or concentration of the liquid is higher if the temperature is low. Are you getting my question or no? बताओ. अगर कोई भी सिस्टम का if the system temperature is low, then my question is the concentration of solid is higher or concentration of liquid is higher. बताओ. मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा पर्टिकुलर एलिमेंट सॉलिड फेज पे ज्यादा प्रेफरेंस देगा या लिक्विड पे ज्यादा प्रेफरेंस देगा. बताओ. एनी टेक ऑन दिस, कोई भी आइडिया. डिपेंड्स अपॉन द पिट. मैं तो वही बोला ना विनय, मैं ऑलरेडी दे दिया सिस्टम तुमको. इफ द टेम्परेचर इज लो, then tell me the concentration of the particular element is higher in the solid phase or liquid phase. Particular, the preference will be the solid phase, right? If the temperature is low, that means the structure is compact or densely packed. Am I right or wrong? If the density of the crystal is so high, then the particular element is preferred to the solid phase. Are you getting my point or no? Any doubt? अगर टेम्परेचर लो होगा, that means the D is tells about PT condition of system. Are you getting my point or no? Ruby, are you getting or any confusion? अगर टेम्परेचर लो होगा suppose, तो crystal structure and all the crystal atomic packing is so dense, right? So all the element present there is preferred to go into the solid phase, right? So the concentration of the solid will be the higher, right?
If the concentration of the solid is higher, then D will be the higher, right? That means D will tells about the PT condition of the geological system. Clear? Okay, हम compatibility बाद में पढ़ेंगे. Yeah. So there will be the some exchange equilibrium of component I between two phase, that is called solid phase and liquid phase. Suppose there will be the liquid system and solid system. So there will be the element I. How there will be the exchange taking place between the I, between the solid phase and liquid phase. That tells about the partition coefficient or distribution coefficient. क्लियर. सो के विल बी, इसको छोड़ो, जब हेनरी लॉ पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे. सो एक्टिविटी ऑफ सॉलिड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ लिक्विड. अभी के लिए फिलहाल सिर्फ याद रखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड. डोंट कंफ्यूज बिटवीन द एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन. आई विल डिस्कस आफ्टर हेनरी लॉ. ठीक है. सो एक्टिविटी इज, you can write also gamma I, that is called activity coefficient, and x will be the mole fraction. ठीक है. अगर न्यूमेरिकल पे कहीं पे एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड मोल फ्रैक्शन दे दिया, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और bulk डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्टीशन कोफिशिएंट. ठीक है. So K will be the equilibrium constant, or that is called partition coefficient or distribution coefficient. इसको छोड़ दो अभी के लिए. सिर्फ concentration of solid upon the concentration of liquid याद रखो of any particular element. ठीक है. हम जब हेनरी लॉ पढ़ेंगे ये डिस्कस करेंगे. हेनरी लॉ. ओके, डोंट कंफ्यूज. Any doubt till now? Any doubt? Because this is the concept. You can get the numerical also and the CSIR net and the gate examination, and also subjective paper पे क्वेश्चन पूछ सकता है. Write down about KT or write down about D or write down about partition coefficient. You can get such question in the subjective paper. Any doubt till now? How about the role of pressure in K? I will discuss after Henry law. You can understand about the concentration, how the activity will take place. ठीक है. मैं वही बोला ना, you can write. अगर जैसे मान लो मैं पीटी कंडीशन डिस्कस नहीं किया था, जब डी अभी डिस्कस किया था, यू अंडरस्टैंड हाउ द टेम्परेचर इज द फैक्ट. ठीक है. देन व्हेन वी डिस्कस द हेनरी लॉ, यू कैन प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड, यू कैन कोरिलेट. जब आगे के पढ़ेंगे तो पीछे पीछे का कोरिलेट करते जाना. You can proper understand and visualize those things. ठीक. Don't worry. Clear Ruby? Any doubt? So इसको बोलते हैं also notched partition coefficient. Don't confuse. अगर कोई भी साइंटिस्ट का नेम दे दिया ना, suppose क्वेश्चन पे notched partition, write down about notched partition coefficient, then don't confuse. ठीक है. It is same as the partition coefficient or distribution coefficient. So notched partition coefficient or distribution coefficient KD, कोई बोलते हैं D. डोंट कंफ्यूज. जो भी तुम ले रहे हो ना नोटेशन, के डी लो चाहे डी लो, वही नोटेशन हमेशा याद रखना. डोंट कंफ्यूज. टेक योर ओन नोटेशन, चाहे के डी लो तुम या डी लो. सो के डी इज इक्वल टू concentration of the solid upon concentration of the liquid. So CS will be the concentration of the particular element, because I मान लो in the solid phase, concentration of the element in the liquid phase. Same particular element I. So how the particular element is partitioning in the solid phase, how the particular element is partitioning between the solid phase and the liquid phase. Okay. And what about those concentration in the solid and liquid phase? So that is called partition coefficient. Clear? कहाँ से मिलते हैं? Whether the particular KT value is fixed, it depends upon the numerous component. बहुत पे वेरी करता है. KT value is not sometime fixed. KT value vary. It also KT value depends upon the several factor, right? Depends upon several factor. जैसे मान लो प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशन ऑफ सिस्टम हो गया,
मेल्ट कंपोजिशन हो गया, हम डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। मेल्ट कंपोजिशन हो गया, सपोज कहीं पे कंपोजिशन ऑफ रॉक हो गया, दैट आल्सो अफेक्ट कंपोजिशन ऑफ रॉक। जब तुम लैब पे लाओगे उस सैंपल को, जब एनालिसिस करोगे, देन वी मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, नॉट फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन लैब, ठीक है, by different type of experiment as well. So where do KD come from? Why do get into the KD? Natural sample, coexisting mineral and melt. So you can get in lab also. When you analyze the sample in the lab, you can find the different type of concentration in the solid or mineral, particular mineral, and magma or melt. ठीक है, then you take the ratio, ठीक है, then you measure the distribution coefficient or in situ. जैसे मान लो टीम्स हो गया, आयरन प्रोब इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेजर एब्लेशन ICP-MS हो गया, then we analyze in the instrument and finally conclude in the D value, ठीक है। don't go into this, I just put the further your knowledge कहाँ से मिलता है एक्चुअली, ठीक है। So factors affecting partition coefficient, so it is also subjective, write down the factors affecting the partition coefficient, so you can write also in the exam, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन फोगैसिटी हो गया, हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन फोगैसिटी क्या है, ठीक है, क्रिस्टल केमिस्ट्री हो गया, वाटर कंटेंट ऑफ मेल्ट, कितना वाटर कंटेंट है, ठीक है, composition of the melt, composition of the rock, all those type of parameter that affects the partition coefficient or KT value, ठीक है। This has been taken from the Rollinson book. Clear? It's just a model, ठीक है, gives the model for the proper understanding the petrogenesis of the rock, ठीक है, or any type of geological system. For understanding any type of geological system or understanding the PT condition of the geological system, we normally define the distribution coefficient. It's just a model, okay. So KT value is specific to an element and mineral, also depends on temperature and melt composition, अभी बताया था. So element which are incompatible in most rock, अभी के लिए छोड़ो, we will discuss. So this is called the distribution coefficient, KT value, distribution coefficient of different type of element, distribution coefficient of element in rock. मान लो कि ओलिविन है, ठीक है, देखो अगर नजर डालोगे ni एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट in olivine is higher, it is approximately 14, right? So that's why we are normally saying कि Ni is partitioning into olivine, ये हमेशा आप सुनते आए होंगे, right? Ni is partitioning to olivine, that means Ni is more compatible to the olivine, ठीक है। हम जब गोल्डस्मिथ रूल डिस्कस करेंगे ना, आपको पता चलेगा गोल्डस्मिथ रूल फॉर सब्स्टिट्यूशन, how the trace element is substitute to the major element, ठीक है। ये substitution के वजह से आपको पता चलेगा whether this particular element is compatible or incompatible in a particular element or rock. So any particular element can be compatible in a particular rock or any type of element can be incompatible for the same rock, ठीक है। It depends upon the several factors. So thermodynamic basis don't go into detail because मैं thermodynamic नहीं पढ़ाया हूँ, जब पढ़ाऊंगा उसके बाद कोरिलेट करना, ठीक है, गैस कांस्टेंट और केमिकल पोटेंशियल, राइट, chemical potential gives free energy, right, potential gives energy, entropy, enthalpy, right, gas law. Then you can correlate how we can express the K value or partitioning coefficient in terms of the gives free energy. So this is the expression you can write in the subjective paper as well. आप subjective paper पे भी write कर सकते हो. You can get also the numerical part from this part. I will discuss, don't worry. जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो correlate करते जाना, ठीक है। जब नॉन्स इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना, नॉन्स इक्वेशन EHPH डायग्राम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन थ्योरी, देन यू कैन कोरिलेट हाउ द KT value or distribution coefficient is expressed in terms of the chemical potential, bit it gives free energy, right,
in terms of the Nernst equation, right? So you can write रिलेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट अभी बताया था. सपोज 3 सिस्टम है, 3 फेज है, अल्फा बीटा गामा, एंड ऑल आर इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. सपोज अल्फा एंड बीटा आर इन इक्विलिब्रियम एंड अल्फा एंड गामा आर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. सपोज 3 फेज है, अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा बीटा इक्विलिब्रियम पे है, अल्फा गामा इक्विलिब्रियम पे है. देन हम कंक्लूड करेंगे बीटा एंड गामा आल्सो इन द इक्विलिब्रियम. देन इट फॉलोज दैट, कैसे पता चलेगा? Partitioning between the alpha and beta is equal to partition coefficient between the alpha and gamma phase and partition coefficient between the alpha and beta phase. Clear or any doubt? Suppose 3 सिस्टम है, अल्फा बीटा एंड गामा. ये 3 सिस्टम पे हम कैसे पता करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट? ठीक है. सपोज मान लो अल्फा एंड बीटा इक्विलिब्रियम पे है, मतलब एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इज पार्टीशनिंग बिटवीन द अल्फा एंड बीटा फेज in equilibrium with each other. ठीक है. and alpha and gamma in the equilibrium phase. ठीक है. then we conclude then beta and gamma also in equilibrium with each other. then the partition coefficient between alpha and beta कैसे determine करेंगे? it is the partition coefficient between the alpha and gamma phase upon the partition coefficient between the alpha and beta phase. Clear or any doubt? Any doubt? Because any doubt? Ruby, any doubt till now? Clear? Okay. No, sir. Okay, that's great. So this relation is the practical use or the experimental use. We can measure the partition coefficient in the lab. ठीक है, अभी बताया था. So this is really important for the examination point of view. ठीक है. Let's practice some of the numerical. Right. Calculate the concentration in the ppm of Ni in olivine that crystallized from the basaltic magma containing 30 ppm Ni. Okay, where the partition coefficient between solid and melt phase of nickel is 7. Calculate. कितना आएगा बताओ? ये एक करेंगे, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट. टेक द स्क्रीनशॉट, राइट, एंड डू इट एंड सेंड इट टू द इन द ग्रुप. ओके, दिस इज फॉर द असाइनमेंट. ये दोनों क्वेश्चन. ये बताओ, क्वेश्चन 1 बताओ. आई ऑलरेडी लाइक से बिफोर कमिंग टू द क्लास कम विथ द कॉपी एंड द साइंटिफिक कैलकुलेटर. क्लास से पहले बताया था ना. बताओ. 210. ओके. Any other take on this? Any other answer? Ruby, what is your answer? Tell me. 4.2. 4.2. 4.2 something. 4.2 कैसे किए? क्या दिया हुआ है पहले देखो. गिवन क्या दिया हो पहले लिखो. Where the concentration in ppm, concentration ppm पे दिया हुआ है, of Ni, any particular element, that is element is Ni in olivine that crystallized from basaltic magma. Suppose ये magma है made up of basalt. ठीक है. When it crystallizes, olivine जहां पे Ni का एलिमेंट है वहां पे concentration, calculate the concentration Ni in olivine पे कितना है पूछा है. फ्रॉम ए बासाल्टिक मैग्मा कॉन्टेनिंग 30 ppm Ni, मतलब मेल्ट फेज पे 30 ppm Ni है. ठीक है.
पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन सॉलिड एंड मेल्ट फेज दिया हुआ है Kd गिवन दिया हुआ है 7. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन वो पूछा है ओलिविन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है. क्या जानते हैं हम Kd इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड फॉर द निकल एलिमेंट ओपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लिक्विड फॉर द निकल एलिमेंट, और माग्मा ले लो कॉन्सेंट्रेशन इन द मेल्ट फेज. सो Kd गिवन दिया हुआ है 7 है ना. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पूछा है, लिक्विड पे कितना दिया हुआ है 30, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड कितना हुआ 30 इंटू 7 210 राइट. आपका कैसा आ गया बताओ मुझे 4.2. I think I misplaced the solid and the liquid thing. अभी समझ में आ गया या नहीं, या फिर से एक्सप्लेन करो? Fine, clear. Okay, I think you are not clear. I already can repeat. मुझे मैग्मा चैम्बर है, ओलिविन फेज मान लो, मेल्ट फेज मान लो, ठीक है. एलिमेंट इज Ni. So Ni is partitioning between the olivine or solid phase system in the melt system any particular, ठीक है. magma chamber जो बासाल्टिक origin है और बासाल्टिक composition है, वहाँ पे olivine crystallize कर रहा है. तो यहाँ पे कितना concentration पूछा है हमको, और magma chamber पे एलिमेंट का concentration दिया हुआ है, और Kd दिया हुआ है between the solid and melt phase. Kd दिया हुआ है 7. क्लियर? सो Kd हम क्या जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड फॉर द निकल एलिमेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेल्ट. माग्मा तो मेल्ट ही है ना, राइट. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लिक्विड पता है नहीं एलिमेंट. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पूछा है, लिक्विड तो दे दिया हुआ है 30, Kd दे दिया हुआ है 7. सो 30 इंटू 7 इज 210. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? रवि, क्लियर राइट नाउ? Yes, sir. So solution answer will be the 210. And these two, take the screenshot and send it to me. Okay. This is the assignment for you. Okay. These two part. We'll discuss in the next class. Okay. Then in the next class, I will discuss from the incompatible compatibility. क्या है, ठीक है. हम next class पे discuss करेंगे. There will be huge, I think, classification based on the geochemical behavior for the multiple. नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करते हैं, ठीक है. ओके, विल स्टॉप. एनी डाउट टिल नाउ? आस्क मी.